So today we are starting the revision class. So first we'll revise that nuclear models. So before doing this, let us define, as you know, that binding energy formula, right? What is binding energy? Binding energy is nothing but mass defect delta M into C square, right? Where mass delta M is called mass defect, and that is defined as Z times MP plus N times Mn minus actual mass of nucleus, right, into C square. Okay. This is the mass defect, right? So mass defect is nothing but Z times mass of protons plus N. N is the number of neutrons in a nucleus times mass of a neutron minus actual mass of nucleus. So it is observed that for stable nucleus, the predicted mass is actually higher than the actual nuclear mass, or actual nuclear mass for a stable nucleus is smaller than the predicted value. So binding energy is defined as amount of energy is required to separate the nucleons, each nucleons from nucleus. So that can be calculated from this formula. Now we are going to discuss about that model, because at least one or two questions you will get, 5 marks question you will get from nuclear model. So first, that model that we are going to discuss, that is your liquid drop model. Okay. And this is also called semi-empirical mass formula. So in that liquid drop model, that binding energy of a nucleus is derived from 5 terms. So first of all, you have a volume energy term that is called AVA. So this is the volume energy of a nucleus. Okay. Then there is a surface energy AS A the power 2/3. Okay. So minus means because of surface energy, there's a reduction in the binding energy. And there's a Coulomb term again, AC Z square A the power 1/3. And then you have asymmetric energy term, that is A into A minus 2Z square divided by A. And then you have a pairing term, that is delta. This delta is 0 for odd even, yeah, even odd combination, right? And this is plus pairing coefficient divided by A the power 3/4 for even combination, and is minus AP divided by A the power 3/4 for odd combination. ठीक है ना? तो यहां से किस तरह के क्वेश्चन दे सकता है? So this is called volume energy term. This is surface energy. This is Coulomb energy. This is asymmetric energy, and this is called pairing term, right? तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है कि volume energy per nucleon of a nucleus, how it depends upon mass number. So total volume energy of a nucleus is AVA. Per nucleon means AVA divided by A. So it will be independent on mass number. Similarly, surface energy per nucleon. So this is the total surface energy of a nucleus. Per nucleon means you are dividing by mass number A. So how that surface energy of a nucleus, surface energy per nucleon of a nucleus is varying with mass number. Okay, so this kind of question used to ask. Okay, the most important thing is, for a given isobaric family, what is the value of Z naught for a most stable nucleus, है ना? तो
you can see this binding energy. ये binding energy जो है according to liquid drop model that depends upon mass number and atomic number. Now for an isobaric family, mass number is constant, so the binding energy will be varying upon that atomic number. So जब आप mass number constant means what? That your isobaric family. So for an isobaric family, what is the value of atomic number for most stable nucleus? This question is, I mean, very, very important. Every time they used to ask in CSIR 5 marks question. Okay. So I will calculate this Z naught. So for most stable nucleus, binding energy will be maximum. And binding energy is a function of Z. To get that maximum binding energy, what you have to do? You have to differentiate this with respect to Z. And this will be maximum at Z equals to Z naught. And you have to keep that is equals to 0. Okay. So in fact, they will provide you this type of formula. This type of formula they will provide you, and they will ask you calculate the atomic number of most stable nucleus for a mass number. They will provide you that mass number. Okay. So what you have to do? Just you have to differentiate this binding energy with respect to Z, and you have to keep Z equals to Z naught, and you have to substitute that equals to 0. If you do this, you will get Z naught equals to twice A of A into mass number divided by AC A the power 2 by 3 plus 4A of A. So this is the atomic number of most stable nucleus for a given isobaric family. So ये जो कूलम कोफिशिएंट, एसिमेट्रिक एनर्जी कोफिशिएंट, ये सारे गिवन रहेगा, और आपका ये भी मेंशन रहेगा कि आपका मास नंबर समझ मान लो ऑन 25 मास नंबर के लिए मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कितना होगा. So just you have to use this formula, and just you have to substitute that values. They will provide these values and you can easily calculate. ठीक है ना. तो इस तरह की जो क्वेश्चन है, that is very very common question है ना, that you have to keep in mind. huh? 2 asymmetric energy A, then this is the mass number, right? Okay. Then next you have now from this binding energy, you can define the mass of a nucleus, right? From liquid drop model itself, the mass of a nucleus you can define, that is ZA, that will be what? Actual mass, that will be ZMP. Then NMN, right? N is nothing but A minus Z Mn, right? And then you have a binding energy, that is AVA minus S A the power 2 by 3 minus AC Z square divided by A the power 1 by 3 minus A of A minus 2Z square divided by A, and then you have a pairing term delta, है ना. अब इसके बेस में आपको क्वेश्चन दे सकता है. सपोज मान लो आपको मिरर न्यूक्लियाई गिवन रहेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिरर न्यूक्लियाई, suppose I'm taking example oxygen 815 and nitrogen 715. They are basically mirror nuclei, right? So mirror nuclei means they are basically belongs to isobaric family, mass number same, but they are special because in mirror nuclei what will happen? The atomic number of one nuclei will be, or the proton number of one nuclei will be matching with neutron number of another, and proton number of this nuclei will be matching with neutron number of this nuclei. So they will provide you that 2 mirror nuclei, and their nuclear mass will be given. The nuclear mass will be given, 2 mirror nuclei will be given, their nuclear mass will be given, and what they will ask you to calculate the Coulomb coefficient. They will ask you to calculate Coulomb coefficient. So in that course, this type of question I can represent like this. You see, this is like a Z plus 1. इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? Z होगा, और इसका मास नंबर दोनों का क्या है? A है. तो दोनों का न्यूक्लियर मास गिवन है
है ना. नाउ इफ आई यूज लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो हम ये लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर मास फॉर ए मिरर न्यूक्लियाई Z plus on A minus nuclear mass of another on another nuclei, that is ZA, है ना. That will be what, है ना. तो दोनों का मास का सब्सट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, हमेशा MP minus MN, MP minus MN, and then you will have SC divided by A the power 1 by 3, and then you have Z plus 1 का square minus Z square, है ना. तो यहाँ से देखो आपका दो मिरर न्यूक्लियाई का मास गिवन रहेगा, है ना. तो दोनों मिरर न्यूक्लियाई का आप एटॉमिक नंबर इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एक का अगर जेड है दूसरे का क्या होगा, जेड प्लस 1 होगा हमेशा, देखना. ठीक है, तो दोनों मिरर न्यूक्लियाई का आप न्यूक्लियर मास को सेपरेट करो, है ना. एंड राइट साइड में देखोगे हमेशा आपको इस तरह के मिलेगा, MP माइनस MN मिलेगा. MP इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन. ये जीरो मत करना, तो फिर आपको गलत आंसर आएगा, बिकॉज न्यूट्रॉन मास इज हेवियर देन प्रोटॉन, है ना. तो एग्जैक्ट मास रखो इस साइड, एंड दिस मास नंबर विल बी प्रोवाइडेड, ये भी आपका प्रोवाइड रहेगा. सो यू हैव टू कैलकुलेट द कूलॉम कोएफिशिएंट, है ना. so this is also very important question. They will provide you two mirror nucleus and the nuclear mass will be given. You have to, they will ask you to calculate Coulomb coefficient. Okay. In fact, this time ये directly आपका इस तरह की relation पूछ सकते हैं. हाँ. सर एक एसिमेट्रिक टर्म भी, एसिमेट्रिक टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि एसिमेट्रिक टर्म में देखना मिरर न्यूक्लियर के लिए हमेशा जो N माइनस जेड होती है एसिमेट्रिक टर्म के लिए हमेशा ऑन होती है. मिरर न्यूक्लियर में जितना न्यूक्लियस होती है हमेशा हर एक न्यूक्लियर का N माइनस जेड जो होती है हमेशा प्लस माइनस ऑन होती है. तो प्लस माइनस ऑन का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस ऑन ही आएगा ना दोनों के लिए, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो जीरो आ जाएगा वो. मिरर न्यूक्लियाई में जितना सारे न्यूक्लियस होती है हर एक का जो देखोगे N माइनस जेड दैट विल बी आइदर प्लस ऑन और माइनस ऑन. सो A माइनस 2Z का स्क्वायर इज नथिंग बट N माइनस जेड, राइट. तो N माइनस जेड का स्क्वायर whether it is plus on or minus on, you will get plus on. तो दोनों का सब्सट्रैक्ट करोगे सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा एक्सेप्ट कूलॉम टर्म बचा रहेगा. ठीक है. इनफैक्ट ये आपका डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि मिरर न्यूक्लियर है, सो देयर डिफरेंस इन द न्यूक्लियर मास विल बी दे विल प्रोवाइड यू ऑप्शन. सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है ना, ये भी पूछ सकता है. ठीक है. Another from that liquid drop model, again suppose they have provided you that two mirror nuclei. Okay, they provided you two mirror nuclei and their binding energy difference is provided. Their binding energy difference is provided and they may ask you the radius of on mirror nuclei. On nucleus, suppose I am taking example, suppose you have a manganese, 2549 and you have a chromium 2449. So they are mirror nuclei. Okay, so their binding energy difference is given. Their binding energy difference is given and it is mentioned that binding energy difference is coming because of Coulomb energy. Binding energy difference of this nuclei is coming because of Coulomb energy. And then they may ask you what is the radius of this nucleus or what is the radius of this nucleus, है ना. तो बाइंडिंग एनर्जी दोनों का बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस जो आ रहा है किसके कारण है, दैट इज आल्सो मेंशन कूलॉम एनर्जी के कारण. अगर देखोगे जो बाइंडिंग एनर्जी होती है आई मीन कूलॉम एनर्जी का जो फॉर्म होती है ना, इफ यू राइट दैट कूलॉम एनर्जी फॉर्म, क्या होती है एक्चुअली, दैट इज लाइक E square by 4 pi epsilon naught, E square by 4 pi epsilon naught, then 3 by 5 Z square by R होती है, Z square by R होती है. ठीक है.
सो ये आपका कूलम्ब एनर्जी टर्म है, राइट? आई कैन डिफाइन लाइक दिस। अब दोनों का जो आपका बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, सो बाइंडिंग एनर्जी में आपका कूलम्ब एनर्जी टर्म भी है। अगर देखोगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में बाइंडिंग एनर्जी में आपका लिक्विड ड्रॉप कूलम्ब एनर्जी टर्म है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी दोनों का जो डिफरेंस इन द बाइंडिंग एनर्जी गिवन दोनों का किसके कारण आ रहा है? कूलम्ब एनर्जी के कारण आ रहा है, ये मेंशन है। तो दोनों का जब बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस लोगे कूलम्ब एनर्जी में, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस दोनों का लोग जब आप यूज करोगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल को यूज करके, तो जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस आएगा that is because of Coulomb energy, right? So what you can write actually the binding energy difference that will be basically E square by 4 pi epsilon naught 3 by 5 R into Z Z plus 1 ka square minus Z square, and that energy that will be given है ना। तो Z plus 1 मतलब suppose this 2 muon nuclei is given, Z plus 1 मतलब इसका एटॉमिक नंबर और Z मतलब इसका एटॉमिक नंबर, और ये बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस गिवन रहेगा आपको। तो यहाँ से आप सारे पैरामीटर गिवन है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस और दिस न्यूक्लियस, ठीक है ना। सो दिस इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे may ask. So a 2 muon nuclei they will provided, and the difference in the binding energy that is coming due to their Coulomb energy that will be mentioned, and they will ask you what is the radius of this nucleus or what is the radius of this nucleus. So nothing, just you have to write that Coulomb energy by taking your nucleus as a solid sphere. If you derive that Coulomb energy, that will be coming this. So difference in the Coulomb energy, that is the that is actually the difference in the binding energy that is mentioned. Just you have to take the difference in the Coulomb energy, and that is the difference in the binding energy, and that will be provided. Just substitute that values of Z plus on Z, you will get the radius of any nuclei belongs to muon nuclei. So this is actually in liquid drop model. This is I mean specific few equation. Among this equation you will get question. Then you have a cell model. You have a cell model. Cell model may as you know that nucleus is having cell structure. Okay, so similar to that electronic configuration, that nucleus is also nucleon is also filling inside nucleus like a electronic configuration atom, है ना, and neutrons and protons inside nucleus they are filling separately. So how will this that sequence, how will that fill that nucleons? कैसे fill करोगे? There is a sequence. So first will be coming like on s half. First you have to fill this cell. So maximum capacity will be how much? 2 J plus 1, that will be what? 2. Then next cell will be coming on P 3 by 2. The maximum capacity of this cell will be what? That will be your 4. Next will come on P half. Maximum capacity will be 2, right? Sir, D, sorry, T. It will be like this. Then next will come on D 5 by 2. Maximum capacity will be what? That will be 6. Then 2s half. Maximum capacity will be what? Your 2. Then on D 3 by 2. Maximum capacity will be what? 4. है ना? Next क्या आएगा? You'll have on F 7 by 2. ठीक है ना? Maximum capacity will be 8. Then 2P 3 by 2. Maximum capacity will be 4. Right? And then on F 5 by 2. Maximum capacity will be 6. And then you'll have on P half. Maximum capacity will be 2. Right? And then you'll have on G 9 by 2. इतना तक करना पड़ेगा, 10 आएगा. So in that way that nucleons है ना, nucleons are actually filling inside nucleus. ठीक है ना? हाँ जी, हाँ हाँ. इतना तक ही आपको याद करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको नहीं देगा बेसिकली.
ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? दिस इज फिलिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। सो न्यूट्रॉन्स को सेपरेटली फिल करोगे और प्रोटॉन को सेपरेटली फिल करोगे। इसका एप्लीकेशन क्या है? यू कैन आइडेंटिफाई दैट ग्राउंड स्टेट, यू कैन आइडेंटिफाई ग्राउंड स्टेट, स्पिन एंड पैरिटी। ठीक है, जेएफपी। तो बेसिकली कैसे करोगे ग्राउंड स्टेट, स्पिन एंड पैरिटी ऑफ ए न्यूक्लियस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका इवन इवन कॉम्बिनेशन होती है न्यूक्लियस का, इवन इवन कॉम्बिनेशन मतलब इवन जेड एंड इवन एन, तो उसमें आपको स्पिन पैरिटी क्या मिलते हैं? हमेशा 0+. 0+। ओके, अगर सपोज मान लो जेड इवन है, हाँ, एंड एन ऑड है, तो फिर क्या करोगे आप? Only calculate the odd. ये फिलिंग करोगे आप, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितना होगा, है ना, उसको आप फिल करते जाओगे और देखोगे जी कि लास्ट जो आपका लास्ट जो न्यूट्रॉन है, लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन का क्या देखोगे? जेएन कितना है, लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन का जेएन कितना है। सो दैट विल बी योर एक्चुअली लास्ट अनपेयर्ड का जेएन देखोगे, है ना, जैसे फिल करते जाओगे और लास्ट जो अनपेयर्ड न्यूट्रॉन है उसका जेएन देखोगे, दैट विल बी द स्पिन ऑफ दिस न्यूक्लियस। ठीक है ना, और पैरिटी कैसे चेक करोगे? पैरिटी विल बी व्हाट? माइनस ऑन द पावर L+. लास्ट अनपेयर्ड जो न्यूट्रॉन है उसका ln कितना है। So it is even Z and odd n, no? हाँ जी, Even Z and odd n. इवन जेड एंड ऑड एन। Odd n. हाँ, ठीक है ना। अगर उल्टा हो जाए, समझ मान लो कि ये आपका ऑड और ये आपका इवन है, देन फिर आप क्या -1 to the power देखोगे? LP. एग्जैक्टली, तो यहाँ पे लास्ट आपको जेड को फिल करना पड़ेगा इन दैट वे, और लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन का क्या निकालना पड़ेगा? जेपी निकालना पड़ेगा, और फिर दैट विल बी द जो अनपेयर्ड प्रोटॉन का जेपी होगा, दैट विल बी द स्पिन ऑफ दैट न्यूक्लियस, और जो पैरिटी होगा उस न्यूक्लियस का कितना होगा? दैट विल बी माइनस ऑन द पावर लास्ट अनपेयर्ड जो प्रोटॉन होगा उसका एलपी होगा। LP means orbital quantum number. For s orbital, that L will be 0. अगर लास्ट अनपेयर आपका प्रोटॉन s में बिलोंग करता है, L will be 0. p में बिलोंग करता है, that L will be on. d में बिलोंग करते हैं, L will be 2 and so on. ठीक है ना, तो इस तरह के केस है। अगर दोनों सपोज मान लो ऑड ऑड केस है, प्लीज वेट सर। हाँ हाँ, देख लीजिएगा, है ना, दोबारा। अगर सपोज मान लीजिए आपका दोनों ही आपका ऑड ऑड कॉम्बिनेशन है, सपोज मान लीजिए, फिर कैसे करेंगे आप बताइए? Calculate the for both JP the plus JP and J and N. Then you have to calculate the N, the JP plus J minus LP plus LN. एग्जैक्टली तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन का जेपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन का एलपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जेएन कैलकुलेट करना पड़ेगा, एलएन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, और जो अगर आपको लेना पड़ेगा सम जेपी प्लस एलपी प्लस जेएन प्लस एलएन। अगर ये आपका सपोज मान लीजिए इवन है, तो जो आपका न्यूक्लियस का स्पिन होगी, दैट विल बी हाउ मच? जेपी माइनस जेएन होगी। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन, अगर आपका सपोज मान लीजिए अगर ऑड आ गया, जेपी प्लस एलपी जेएन प्लस एलएन, अगर सपोज मान लीजिए ऑड आ गया, इट मींस आपका जो नेट स्पिन होगा न्यूक्लियस का, दैट विल बी हाउ मच? मॉड ऑफ जेपी प्लस जेएन। और इस ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन में जो न्यूक्लियस का पैरिटी होती है, दैट विल बी हाउ मच? माइनस ऑन द पावर एलपी प्लस एलएन, द पैरिटी ऑफ दिस न्यूक्लियस। ठीक है ना जी, तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका कि आपका न्यूक्लियस गिवन रहेगा और स्पिन पैरिटी, ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी निकालने के लिए बोलता है ना। दैट इज 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट आपको फिल करना पड़ेगा।
sequentially. ठीक है जी. So this is a first application of cell model. Then you can calculate that quadrupole moment also. Ground state quadrupole moment. Okay. So how will calculate? So that is -3/5. Then आपको क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस का स्पिन K. निकालना पड़ेगा. 2j 2j minus minus 1 by 2, 2j plus 2. 2j plus 2 एग्जैक्टली. तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वाड्रुपल निकालने के लिए ग्राउंड स्टेट स्पिन निकालना पड़ेगा. स्पिन निकाल लोगे जैसे पहले हम सीखे हैं कैसे स्पिन निकालते हैं, राइट? स्पिन निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. देन क्या आती है? और आर स्क्वायर आते हैं, राइट? R square. आर स्क्वायर सपोज मान लो कोई न्यूक्लियस गिवन है. आर स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे? कैसे उसका आर कैलकुलेट करोगे? आर नॉट A to the power 1/3. 1/3 स्क्वायर. ठीक है. So in that way you can calculate quadrupole moment, ground state quadrupole moment. Now you have a ground state magnetic moment. Okay. अगर सपोज मान लीजिए you have a Z and you have a N. If both Z and N, if both are even, then जो आपका magnetic moment आती है कितना आती है? Because you know that magnetic moment is related to G, then I mu n, right? I you can write J also. J is the spin. 0. हाँ. तो अगर इवन कॉम्बिनेशन है तो J कितना आती है? इवन न्यूक्लियर स्पिन कितना आती है? 0 आती है, राइट? तो फिर इवन कॉम्बिनेशन में आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगी? 0 आएगी. देन आपका सपोज मान लीजिए आपका ऑड इवन कॉम्बिनेशन है. ऑड इवन कॉम्बिनेशन में अब ऑड इवन है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? मैग्नेटिक मोमेंट किसके कारण निकालना पड़ेगा? For odd. प्रोटॉन के लिए निकालना पड़ेगा, राइट? बिकॉज़ The प्रोटॉन इज proton ऑड है. is forming by L plus half or L minus half. एग्जैक्टली. तो प्रोटॉन लास्ट प्रोटॉन फिर आपको कैसे करोगे? अगर सपोज मान लीजिए आपका ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ न्यूक्लियस विल बी अराइजेस बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ प्रोटॉन. क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है? न्यूट्रॉन तो इवन है, तो इवन के लिए इवन है, तो इसीलिए इस तरह की न्यूक्लियस में जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन. सो हाउ विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट? क्या फॉर्मूला हो दीजिए? So J plus 2.29 mu n is for J equal to L plus half. Exactly. So that is mu n. Mu n means what? Nuclear Magnetron. magnetron. Yeah. Exactly. So this ये कब है? जब आपका लास्ट प्रोटॉन अगर L प्लस हाफ स्टेट पर है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर P है तो लास्ट सपोज मान लो लास्ट अनपेयर्ड जो प्रोटॉन है अगर P 3/2 में है, सो यू यूज दिस फॉर्मूला. अगर सपोज मान लीजिए लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन अगर सपोज मान लीजिए L माइनस हाफ पर है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 minus 2.29 by J plus 1. J by J plus 1 या डायरेक्टली होती है? J J by common. J. J taking common. J by. देन J minus J 2.2. minus 1.292. 1.292 है ना? कब? जब आपका लास्ट अनपेयर्ड जो प्रोटॉन है दैट इज L माइनस हाफ. यू कैन टेक एग्जांपल. यहाँ पे फॉर एग्जांपल P 3/2 में अगर है, अगर लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन P हाफ में है, so it will be like that. ठीक है ना? लेट मी वेरीफाई वन मोर टाइम. It's correct. Okay. Now last combination is what? Next combination. So you have a Z and N, right? If it is even and if it is odd, then how will calculate? तो आपको magnetic moment इसके लिए calculate करना पड़ेगा, right? So what is the formula? For such kind of nucleus, the magnetic moment will be how much? This is minus
1.913 mu n कब, जब आपका लास्ट अनपेयर्ड जो न्यूट्रॉन है if it is belongs to L plus half, and this magnetic moment will be how much? J by J plus 1.913 mu n, जब आपका लास्ट अनपेयर्ड जो न्यूट्रॉन है if it is belongs to L minus half, ठीक है ना? ठीक है ना? इसके बेस्ट पर आपका क्वेश्चन आ सकता है इस बार मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, ठीक है? और अगर सपोज मान लीजिए दोनों ऑड ऑड है, फिर क्या करेंगे आप? दोनों ऑड ऑड है तो इसके लिए, इस तरह की न्यूक्लियस के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी क्या होगी? प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करोगे, प्रोटॉन अनपेयर्ड प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करोगे, दैट यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग प्रीवियस इक्वेशन, एंड फॉर न्यूट्रॉन के लिए भी करोगे, राइट? एंड दोनों को जोड़ दोगे, सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, then you have a Fermi gas model. So in Fermi gas model, basically nucleons are treated as a gas. Gas means nucleons are non-interacting, है ना? nucleus तो interact होता है, but Fermi gas model में क्या assume किया गया है? Nucleons are non-interacting, and neutrons and protons inside nucleus, they are actually filling separately as like a cell. जैसे सेल मॉडल में क्या assume किया गया है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सेपरेटली फिल करना पड़ेगा सेल में। फर्मी गैस मॉडल में भी ये assume करके कैलकुलेट किया गया है कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे विल फिल इनसाइड न्यूक्लियस सेपरेटली, they have cell structure, but in that model it is also assumed that they are actually non interacting, ठीक है ना? तो अगर इसको ये करोगे, इसको पिक्चुरली देखोगे, सपोज यू हैव ए न्यूक्लियस, okay, so you have a this side, you have a protons are filling, this side your neutrons are filling, so their spin half they will feel like this, and this I mean calculation actually made for 0 Kelvin. तो 0 Kelvin में क्या होगा जी बताओ? So your protons and neutrons, they will fill separately, right? And this in this model that calculation is basically done for 0 Kelvin. 0 Kelvin में क्या होगा? So all that protons and neutrons, they will fill and they will form ground state, right? सारे आपका इसका जो लोअर एनर्जी होगा आपका फिल होता जाएगा, राइट? फिल होते होते जो टॉप मोस्ट लेवल आएगी, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? फर्मी गैस मॉडल मतलब क्या है कि सारे आपका क्या हो रहा है, आपका सारे लोअर एनर्जी फिल होता जाएगा, कंप्लीटली फिल होगा। 0 केल्विन में आपका कैलकुलेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सारे लेवल्स आपका फिल होगा, लोअर एनर्जी फिल होते 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 सारे तो एक लेवल में स्टे नहीं कर सकते बिकॉज दे आर फर्मियंस, ओनली 2 विल बी स्टेइंग। सो ऐसे ऐसे फिल होते होते जो टॉप मोस्ट फिलिंग लेवल होगा उसको क्या कहेंगे हम? दैट विल बी योर फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल। सो प्रोटॉन के लिए फर्मी लेवल अलग होगी, न्यूट्रॉन के लिए अलग होगी। सो इफ यू राइट दैट फॉर्मूला, फर्मी लेवल or Fermi energy for proton, so it will be like that, H cross C divided by twice mp c square r naught square, then you have 9 pi by 4 the power 2 by 3, then z by a the power 2 by 3, है ना? And for Fermi energy for neutron, it will be how much? Same, H cross C की power 4 divided by twice mp c square r naught square, then 9 pi by 4 की power 2 by 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Z के जगह पे n आ जाएगा, right? And n you can write a minus z
बाई 2 दी पावर 3। बट यहाँ पे मेन जो पैरामीटर है ये आपका फर्मी एनर्जी आर नॉट के साथ कैसे वैरी हो रहा है। देखो दोनों केस में फर्मी एनर्जी न्यूक्लियस का आर नॉट के साथ कैसे वैरी हो रहा है, देखो 1/r0 स्क्वायर के हिसाब से वैरी हो रहा है, राइट। कैन यू चेक, देखो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा क्या है, जो फर्मी एनर्जी देखो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए दी पावर 2/3, ठीक है ना। इसके बेस पे आपका क्वेश्चन दे सकता है। हाँ हाँ, दोनों क्वेश्चन। तो इसको अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, कैसे करोगे इसको, जैसे आप फर्मी एनर्जी इसमें डिफाइन किए थे, राइट। सॉलिड स्टेट में कैसे डिफाइन किया आपने, याद है। h क्रॉस स्क्वायर y क्या होती है, ट्वाइस m ही होता है, यहाँ पे mp होती है, mp हो जाएगा यहाँ पे, राइट। देन 3 पाई स्क्वायर n by v v whole to the power 2/3 to the power 1 2/3 2/3 होती है ना। और v क्या है, वॉल्यूम है, राइट। ये तो नंबर ऑफ जो आपका ये होता है इलेक्ट्रॉन होती है, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम है ना। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियन कर दोगे इसको। न्यूक्लियन मतलब अगर सपोज मान लो आप प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करोगे तो फिर यहाँ पे जेड आ जाएगा। अगर आपका न्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। वी क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम को क्या लिखोगे आप, इस पे न्यूक्लियस का वॉल्यूम लोगे ना, दैट विल बी 4/3 पाई, क्या लिखोगे, R0 ए, राइट। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करोगे देखो तो फिर क्या आ जाएगा, देखो फर्मी एनर्जी क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, R0 स्क्वायर आ जाएगा, देखो। एंड इट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए दी पावर 2/3। तो अगर ये याद करने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट n के जगह पे अगर प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करोगे तो z रखोगे, और वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस रखोगे, 4/3 पाई r क्यू को आप लिख सकते हो R0 है ना। तो आई थिंक ये वाला यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, राइट। From this we also can find out the mean kinetic energy in terms of A na. हाँ हाँ, यू कैन। तो कर लेंगे ना इस तरह की प्रॉब्लम, ये आपका आ सकता है क्योंकि नया नया क्वेश्चन आ रहा है। रिसेंटली गेट में आया था इसके बेस पर क्वेश्चन कि हाउ इट इज वेरिंग फर्मी एनर्जी विथ R0। ओके, एंड देन यू हैव नेक्स्ट जो है आपका कलेक्टिव मॉडल। Then you have a collective model, ठीक है। In collective model that is observed for heavy nuclei when that mass number is from 150 to 200, right? And when that mass number is greater than what? कितना होती है ये, बताओ। 150 to 200 और क्या होते हैं आपका ये 230, right? And even combination. And you have a even combination. Okay, so in Fermi this इस तरह की जो न्यूक्लियस है they will show this kind of behavior. There is a rotation of nucleus, और यहाँ पे जो आपका स्टेट होती है बेसिकली दैट इज इवन स्टेट, 0 +, 2 +, 4 +, 6 + and so on, है ना। तो फॉर this kind of heavy nuclei will show that rotational behavior, and they will have state like this. This is ground state, then first excited state, second, third and so on. So दोनों सक्सेसिव लेवल के बीच में जो सेपरेशन होती है एक्चुअली किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी सेपरेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एनर्जी एक्सप्रेशन है फॉर any level, so how will define that energy separation, I mean energy expression, that is H cut square by 2i j into j plus 1. exactly, so that is 2i into j plus 1. You can use, if you use subscript j, then j into j plus 1.
जहाँ पे जे क्या हो सकते हैं, जे का वैल्यू क्या हो सकता है बताओ, जे का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है यहाँ पे बताओ। 240 Even. even. Exactly, so this will be your 0 2 4 6 and so on, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट मतलब एनर्जी ग्राउंड स्टेट के लिए 0 हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड के लिए आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह की आपका प्रॉब्लम किस तरह की आता है नेट में बेसिकली, कि आपका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी गिवन है, सपोज मान लो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी गिवन है, और आपको सपोज मान लो आपको पूछा गया कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कितना एनर्जी है, या आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी गिवन है ना। इवन इवन आपको देख के पता चलेगा, अगर इवन इवन न्यूक्लियस है और मास नंबर इस रेंज पर है ना, सो दे विल शो रोटेशनल बिहेवियर, है ना। तो उसके लिए आपका रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड रहेगा, सपोज मान लो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए प्रोवाइड है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या जे का वैल्यू कितना रखोगे 2 रखोगे। एंड अगर सपोज मान लो आपको सेकंड एक्साइटेड के लिए आपको पूछा गया है, तो जे का वैल्यू 4 रख के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मेन थिंग आपका यहाँ पे जे का वैल्यू चूज करना है ना, आपको ओनली इवन वैल्यूज को लेना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो एक स्टेट का एनर्जी आपका गिवन है, सो दूसरा स्टेट का आप निकाल सकते हो। Sir, can you please repeat that the first line that A is valid for 150 to 2 and A is greater than हाँ 230 that ये Sir, and also can you please, in brief, explain this collector model? I didn't get it. Sorry. हाँ As you explained the previous ones. okay, I'm repeating. So the nucleus having even combination, and when that mass number of nucleus in the range of 150 to 200 or greater than 230 with even combination, they will show this kind of spectra. Only there is a even spin with even parities are allowed. Okay, so also इस तरह की जो न्यूक्लियस है उनका जो जब क्वाड्रुपोल मोमेंट कैलकुलेट किया गया है, सो जब आपका इस तरह मास इस रेंज पर है, तो क्वाड्रुपोल मोमेंट क्या मिला है, फॉर सच काइंड ऑफ न्यूक्लियस क्वाड्रुपोल मोमेंट इज हैविंग लार्ज वैल्यू विथ नेगेटिव साइन, है ना। और जब आपका मास नंबर ग्रेटर देन 230 है, तो उसके लिए क्या मिला है, दैट क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ न्यूक्लियस इज एक्चुअली हैविंग हायर पॉजिटिव वैल्यू। तो जब सपोज मान लो कोई न्यूक्लियस है और उसका क्वाड्रुपोल मोमेंट लार्ज है, तो उसका मतलब क्या है, अगर सपोज मान लो क्वाड्रुपोल मोमेंट जीरो है, इसका मतलब क्या है, फिर इफ यू सी दैट क्वाड्रुपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन जो होती है 2/5 z b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना। सो अगर सपोज मान लो क्वाड्रुपोल मोमेंट 0 है, इसका मतलब क्या है, Spherical. spherical, right? Because b equals to, if you define that b and a, तो b a बराबर है, इसका मतलब क्या है, that shape of the nucleus is spherical. अगर सपोज मान लो आपका इस केस में क्या होता है, बेसिकली जो आपका क्वाड्रुपोल मोमेंट मिलता है that is non-zero and having large value, इसका मतलब क्या है, the shape of such kind of nucleus is actually deformed, shape is not actually spherical. So सपोज मान लो एक लिक्विड ड्रॉप है ना, उस लिक्विड ड्रॉप का शेप डिफॉर्म होने का रीजन क्या हो सकता है ना। सो डिफॉर्म होने का रीजन हो सकता है इफ देयर इज अ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हाट विल हैपन, दैट अगर कोई आपका लिक्विड है, समझ मान लो उसको रोटेट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसका शेप डिफॉर्म हो जाएगा। तो ये इस तरह की जो न्यूक्लियस है, their shape is deformed. Bohr said that deformed shape is arising for such kind of nucleus because there's a rotation of such kind of molecule, है ना। तो यहाँ पे कलेक्टिव मोशन मतलब कलेक्टिव मॉडल मतलब जैसे कलेक्टिव रोटेशन और कलेक्टिव मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, न्यूक्लियॉन्स है ना। तो ये शेप आपका सॉरी ये आपका स्पेक्ट्रा जो आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ such kind of rotation of nucleus of such kind of nucleus, है ना। तो इसी वे में जब कैलकुलेट किया गया है जो एनर्जी एक्सप्रेशन, है ना, तो एनर्जी एक्सप्रेशन में आपका J0246 वही अलाउड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका पैरिटी जो होगा दैट शुड बी कंजर्व, है ना। आपको याद है जैसे क्लासिकली जब एनर्जी को लिखते हो आप, दैट इज h क्रॉस स्क्वायर बाय 2i, सॉरी क्वांटम मैकेनिकली, देन J into J+1, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे आपका जैसे आप एनर्जी लिखोगे, देन
सॉरी J लिखोगे, देन एनर्जी लिखोगे एंड देन पैरिटी लिखोगे। तो जैसे आप J इक्वल टू 0 लिखोगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगा। अब पैरिटी कितना आएगा? हाउ विल डिफाइन पैरिटी? माइनस ऑन द पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली? L plus S एस। J. हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली J आ जाएगा, है ना? आपका S 0 यहाँ पे S काउंट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपका Even इवन न्यूक्लियस है ना, सारे पेयर्ड है, तो S विल बी 0, so पैरिटी विल बी डिफाइंड लाइक दैट। तो अगर सपोज मान लो यहाँ पे J इक्वल टू, सपोज मान लो आपने 0 लिया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पैरिटी इवन आएगा, एनर्जी भी आएगा। अगर J इक्वल टू ऑन लोगे तो कुछ एनर्जी आएगा, बट पैरिटी क्या आ जाएगा बेसिकली? पैरिटी क्या आएगा? ऑड आ जाएगा। ऑड पैरिटी इज नॉट अलाउड, है ना, क्योंकि आपका ये इवन पैरिटी मिला है, तो इसीलिए आपका J इक्वल टू ऑन अलाउड नहीं है, J इक्वल टू 3 अलाउड नहीं है, 5 अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका पैरिटी आएगा दैट विल बी ऑड, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दैट स्टेट लाइक 0 2 4 6 एंड सो ऑन। ठीक है ना? सो फर्स्ट Sir, हाँ जी, हाँ जी so बोलिए। there was a question I think that for a nucleus to possess quadruple moment, that nuclear spin value would be greater than half. I was not getting that, sir. कैन यू प्लीज रिपीट? From this, no, not from this. From हाँ, a problem, I think, or somewhere, that for a nucleus to हाँ, possess quadruple moment, the nuclear spin value should be greater than half. I value. हाँ, स्पिन क्वाड्रुपल मोमेंट -3/5, then 2J minus on 2J plus 2 R square, right? तो स्पिन वैल्यू तो देखो, स्पिन वैल्यू तो लेस देन हाफ नहीं हो सकते, राइट? J का भी लेस देन हाफ हो सकती है? नहीं हो सकते। और J हाफ भी नहीं होगा, राइट? J हाफ हो जाएगा तो फिर ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। Have you Okay, ever- got it, got it, got it. हाँ, ठीक है, ओके। सो ये भी देखो, ये बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्म में, बट यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक्चुअली स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देता है, बट प्लीज डोंट इग्नोर, है ना? यहाँ पे जस्ट ऑन ही चीज, और ये चीज बचा मतलब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि J को आपको इवन लेना पड़ेगा। J को 0 दैट इज योर ग्राउंड स्टेट, 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 4 सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, है ना? ऑड को नहीं लोगे। जैसे आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है? J को टू ऑन, दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू, है ना? अनदर आपका जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन से क्वेश्चन आती है। सपोज यू हैव A nucleus is interacting with B and they are producing C and D nucleus. Okay, and let us assume that nuclear mass of A is Ma, for B it is Mb, for C it is Mc, and for D it is Md. And let us define the kinetic energy of kinetic energy of A nucleus, it is KeA, for B it is KeB, for C it is KeC, and for D it is KeD. Okay, binding energy of A nucleus, that is Ba, binding energy of B, that is Beb, binding energy of C nucleus, it is Bc, and for D it is binding energy D. Okay, so how will define that Q value? Q value क्या हो जाएगा in terms of nuclear mass? In terms of nuclear mass क्या होती है जी? Nuclear mass of reactant, sum of the nuclear mass of the reactant minus nuclear mass of the product into C square. अगर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में लिखना है होगा तो फिर कैसे लिखोगे? सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, हाँ, C plus D minus D plus. एग्जैक्टली, C प्लस D माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ A माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ B। इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में लिखोगे तो फिर क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C न्यूक्लियस, A राइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ D nucleus minus binding energy of A nucleus minus binding energy of B nucleus. ठीक है, अगर Q वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट? दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाँ,
So exothermic process means release of energy, right? Release of energy. है ना? अगर लेस देन 0 है क्यू वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? endothermic process. Thermic process. So in this process there will be absorb of energy. This process there will be absorb of energy. ठीक है? So इसको आप डिफाइन कर सकते हो जैसे आपको वो गिवन होगा, अगर न्यूक्लियर मास गिवन होगा तो यू हैव टू यूज लाइक दिस, ठीक है ना? तो ये भी कभी कभी यूज होती है बीटा डीके में, है ना? जब आपका बीटा डीके कोई प्रोसेस होता है ना, तो वहां पे इन बीटा डीके प्रोसेस जो मैक्सिमम एनर्जी होती है बीटा डीके का, सपोज मान लो एक बीटा डीके प्रोसेस है गिवन है आपको, और इसमें बोला गया है कि मैक्सिमम एनर्जी कैरिड आउट बाय बीटा पार्टिकल. सो मैक्सिमम एनर्जी मैं कल डिस्कस करूंगा इसको. मैक्सिमम एनर्जी कैरिड आउट बाय बीटा पार्टिकल इन बीटा डीके, that will be actually, you have to keep in mind, that will be the q value of that beta decay process. ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये भी आपका आता है कभी कभी इसके बेस में. तो कोई भी एक बीटा डीके प्रोसेस समझ मान लो आपको गिवन है और वहां पे आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम एनर्जी कैरिड आउट बाय बीटा पार्टिकल, तो दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्यू वैल्यू ऑफ दैट बीटा डीके प्रोसेस, है ना? ये सेंटेंस आपका दिमाग में रखो क्योंकि इसके बेस में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है? अब लास्ट जो है थ्रेशोल्ड कंडीशन, है ना? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाँ जी, हाँ जी. तो एक बार वो स्टेटमेंट बोल दीजिए ना. हाँ, मैक्सिमम कोई आपका एक बीटा डीके प्रोसेस सपोज मान लो आपको गिवन है ना? कोई बीटा डीके प्रोसेस गिवन है और आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी कैरिड आउट बाय बीटा पार्टिकल. सो मैक्सिमम एनर्जी carried out by beta particle, that will be nothing but q value of that beta decay process. Q value of that beta decay process. Okay. Now there is a threshold energy. This is also important. Suppose you have a target nucleus 2, target nucleus 2, and there's an incident nucleus on. So this target nucleus is bombarded by incident nucleus. Let us take their nuclear mass m1 and nuclear mass m2, है ना? So this is at rest. This is incident on this target nucleus, and they're producing two more nucleus. They're producing two nucleus, 3 and 4, and their nuclear mass m3 and m4, है ना? So what will be the threshold energy of nucleus on is needed to make this process? कितना थ्रेशोल्ड एनर्जी इस पार्टिकल की हो ताकि ये प्रोसेस हो सके? इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है. सो हाउ विल आइडेंटिफाई द थ्रेशोल्ड एनर्जी नीडेड फॉर इंसिडेंट पार्टिकल टू अंडरगो दिस प्रोसेस? कैसे कैलकुलेट करोगे? सो सम ऑफ द न्यूक्लियर मास of product. एग्जैक्टली, सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट minus Okay. m1 square minus m2 square. माइनस क्या करोगे जी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं, माइनस क्या करोगे आप? m1 प्लस m2 का स्क्वायर, मतलब इसका जो रिएक्टेंट का मास है इसको सारे को सम करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस इनटू c स्क्वायर. ठीक है जी. जैसे मैं आपको सपोज मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ. सपोज यू हैव ए इंसिडेंट पार्टिकल प्रोटॉन and gamma photon is incident on this and is producing on proton, on pi particle and on pi minus particle. तो इसके लिए आपको कितना इस फोटोन का थ्रेशोल्ड एनर्जी हो ताकि आपका ये प्रोसेस हो सके? तो टोटल द थ्रेशोल्ड एनर्जी, कैन यू प्लीज टेल मी? बताओ जरा क्या होगा? तो मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द पाई प्लस मास ऑफ द पाई माइनस का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा जी? मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द गामा. मास ऑफ द गामा इज हाउ मच? 0. डिवाइड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, सॉरी टारगेट पार्टिकल इनटू c स्क्वायर.
सपोज मान लो आपका गामा इंसिडेंट हो रहा है, राइट, एंड ऑन न्यूक्लियर मास m एंड इट्स प्रोड्यूसिंग ए हेवी मास m प्लस डेल्टा। एक हेवी मास प्रोड्यूस हो रहा है m प्लस डेल्टा। इसके लिए आपको कितना थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए? इसका क्या होगा? सर हाँ जी, आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है, हाँ जी, स्क्रीन गायब सर, इनसे ब्लैक हो गया पूरा। ब्लैक हो गया। ओके ओके। नाउ So now also it's blank only. visible or not? No sir, it's blank. And now it's okay. So what will the threshold energy for this process? So your gamma is interacting with some mass and it's producing heavy mass m plus delta. कितना एनर्जी चाहिए गामा का? बताओ। That will be m plus No, sir. delta का whole square minus mass M of square. mass m square divided by 2 times 2m 2m. into c square. Okay. So I'll stop here. Tomorrow I'll discuss about that radioactivity and bit about that nuclear detector and nuclear reactor. Okay. So I'll stop here. Okay, tomorrow we'll discuss. Thank you, sir. Mhm. Thank you sir. Thank you, sir.